I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about data handling. So let's start with that. Data handling comes under the branch of mathematics called statistics. Statistics is a branch of mathematics that involves the collections, organizations, analysis and interpretations of data. So data is a collections of numerical figures giving some particular type of informations. Each numerical figure in a data is called an observations. So statistical data is of great use in different fields such as medicines, research, business, weather, education and economic also. Now some important terms. So first one is data. Data is a collection of numerical values that convey some informations. Just like the weight of 25 students of a class measures in kg are obtained as under, means these are the weights of students. These collections of a particular type of informations in the form of numerical figure is called a set of data beta. Hope you understood. Now raw data. अब ये raw data क्या होता है? Let's see. So raw data is the data obtained in the original form. Now array. So array is the agreement of a numerical data in the ascending or descending order. It's very different to draw any interference from this raw set of data. So we arrange it in a ascending or descending order of size. The above set of data arranged in ascending order is 25, then 26, then 27, उसके बाद ये 28 हैं, फिर 30s हैं, फिर 31s and so on. Now tabulations of data. So ये क्या होता है? Let's see. Tabulations of data is the arrangement of data in a systematic form in a table beta. After that observations. Observations are the individual numerical values in data. Then frequency. Frequency is the number of times a numerical observations occurs in data. Okay, and after that range. So range क्या होती है? Range is the difference between the highest and the lowest observations in the given set of data. Okay, by presenting the data in the above manner, we can get some informations about the data. Lowest weight just like 25 kg और highest weight कितना है? Yes, 36 kg. So now the range is 36 minus 25, that is 11. Now statistics. So statistics is the study of collections, organizations, presentations, analysis and interpretations of numerical data beta. I hope you understood the all terms nicely. Now move on frequency distributions. So the number of times a particular observations occurs is called its frequencies. The frequency of 27 kg in the above data is 3 and the frequency of 28 is 5. Means जो 27 kg कितने हैं? 3 के हैं और जो 28 है वो उसकी frequency कितनी है बेटा? Yes, 5 की है. So we may represent the set of data obtained above in a tabular form showing the frequency of each observations beside it as under. So see, these are the table in which weight of a children kg में कितने हैं? Just like 25, 26, 27 and so on. So now tally marks में कितने हैं और frequency में कितने हैं? So 25 1 बच्चे का weight है, so tally mark में हम show करेंगे like that way and frequency में show होगा इस तरीके से. 26 weight 2 बच्चों का है, so we just do like that 1 1 2 and in frequency we write it 2 like that way. Similarly others one. The table showing the frequencies of various observations of data is called a frequency distributions table or simply frequency table. We take each observations from the set of data and count them with the help of strokes called tally marks. For the sake of convenience, we use tally marks in bunches of 5. हम क्या करते हैं? Convenient के लिए 5 के bunches बनाते हैं tally marks में. The fifth one crossing the fourth diagonally like that way.
ओके हम 4 स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं और 5th को शो करने के लिए उसको कट मारते हैं. नाउ सॉल्व एग्जाम्पल फॉर मोर क्लैरिटी. एग्जाम्पल नंबर 1, the marks obtained by 35 students in a science test were as under. 62 marks, then 65, 100 भी लिए, किसी ने 70s भी लिए, and so on. Prepare a frequency distributions table for the above data. So let's start. First we arrange the given set of data in ascending order. Okay, सबसे छोटा 62, then 65 आए, then 70s की, then 75s आए हैं, and so on. Now the frequency distributions table for the above data is marks obtained हैं just like first one में कितने हैं 62 है, तो 62 कितने बच्चों के आए हैं, एक बच्चों के आए हैं, तो just write it 1. frequency में like 1. सपोज अब हम कोई ज़्यादा का देखते हैं जैसे कि 75, तो 75 ये है हमारे 75 कितने बच्चों के आए हैं हमारे 75 आए हैं हमारे, ये है हमारा 5 और ये है हमारे 3, तो 5 6 7 8, तो ये 8 बच्चों के आए हैं. सो दिस इज़ हाउ वी शो इन अ टैली मार्क्स फॉर्म्स एंड इन अ फ्रीक्वेंसी. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट मीन. अब ये मीन क्या होता है, लेट्स सी. द अर्थमेटिक मीन इन स्टैटिस्टिक्स इज द सेम एज एवरेज इन अर्थमेटिक. जैसे एवरेज होता है वही मीन होता है. सी mean of ungrouped or raw data. So the mean of a set of a data is found out by dividing the sum of all the observations by the total number of observations in the data. Okay, so we denote the mean by x, read it x bar, just like this. mean है तो mean हमारा है x और निकालेंगे कैसे, sum of observation और number of observations. This is important, just do revise that one. Now solve example number 1. So here it is, the daily maximum temperature recorded in seas at Ghaziabad during the first week of August 2019 was as under. 37, 36 भी temperature है, 28, 38, 37 and so on. Find the mean. अब आपको mean निकालना है temperature recorded. So how to find out? We know the formula of that one. Sum of observations and number of observations. तो observations का total कितना हो गया 243 और ये कितनी बार आए हैं हमारे 7 times में. So we can say that temperature कितना आया 34.7 degree Celsius. Hope you understood the mean. Now example 2. In that example, find the arithmetic mean of the numbers. अब कुछ numbers given है, अब आपको इसका mean निकालना है. So method are same. Sum of observations and number of observations. So after sum that observation answer is 25. Then 25 divided by 5. So answer is beta yes 5. Now example 3. In that following are the ages in years of 10 teachers in a school. किसी की एज 32 है, then 41 किसी की एज है, किसी और टीचर्स की 27 है. So first question is what is the age of the oldest teachers and that of the youngest teacher. So आपको क्या निकालना है, youngest और oldest teachers का एज निकालनी है. Second one is find the ranges of the ages of the teachers and third one आपको क्या निकालना है, mean निकालना है, एज का mean. So do the first one first. हम क्या निकालेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले जो टीचर्स की एजेस है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. सो 25, उसके बाद 27, देन 28, देन 32 एंड सो ऑन. स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, बिगेस्ट एंड बिगेस्ट. फ्रॉम द अबव सेट ऑफ डाटा वी फाइंड दैट एजेस ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर्स कितनी है 57 और यंगर जो टीचर है उसकी एज कितनी है 25. सो दिस इज सिंपल आंसर. नाउ बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है. सो रेंज निकालने के लिए वी नीड टू जस्ट माइनस विद ओल्डेस्ट टीचर विद यंगेस्ट टीचर. सो 57 minus 25 आंसर इज 32 years. And how to find out mean? Yes, sum of observations and number of observations. So observation का sum हुआ हमारा 378 और कितने टीचर्स हैं 10 हैं. So divide that number and mean of the age is 37.8 years. So this is how we just do.
I hope you understood. So now move on example 4. A group of students was given in a special test. Okay. The test was completed by various students in the following times in minutes. किसी ने 18 minutes में complete किया टेस्ट, किसी ने 20, then 21 and so on. Now first question is find the mean time taken by the student to complete the test. Okay, first में हमें mean निकालना है. Second one, how many students took more than the mean time to complete the test? अब mean time से भी ज़्यादा किसने time निकाला है, लिया है पेपर को complete करने में. Third one, they are asking if the student who took 37 minutes had taken only 23 minutes to complete the test. So what would have been the mean time? So let's see the first one answer, then we will solve B1 and C1 also. So the time taken by student in minutes. So just हम क्या करेंगे, सबसे पहले do that one in a ascending order. 18, then 20, then 21 and 23 and so on. So mean निकालने के लिए we know that formula. Sum of observations and number of observations. So sum कितना है 260 by 10. Now that is 26 minutes. And after that we are just doing here number of student who took more than mean time. कितने बच्चे हैं जिन्होंने mean time से ज़्यादा समय लिया है? Yes, they are 4. Okay. And third one is replacing 37 by 23. New mean time is 18, 20, 21, 23. We just add all these numbers. So 246 divided by 10 is become now 24 minutes and 36 seconds beta. I hope you understood well. So now move on example 5. So given that the mean of the 5 numbers is 27. Mean 5 बच्चों को कितना दे रखा है 27. So if one of the number is excluded, the mean become 25. Determine the excluded number. So mean of the 5 numbers कितना है हमारा 27. अब sum कितना होगा इसका 27 into 5 135. After that given one number is excluded, the average of remaining 4 numbers is equal to 25. So now sum of the remaining 4 numbers कितना हो जाएगा 4 into 25. So excluded number 135 में से now we have to subtract 100 and then answer is beta yes 35. Hope you understood. Now example 6 also. So in that question the mean age of 5 children of a family is 12 years. Okay. If 4 of them are respectively 6, 11, 13 and 16 years, then find the age of the 5th child. So how to do this? Let the age of the 5th child हम क्या ले लेंगे, मान के चलेंगे उसकी x years से. Now mean के लिए we know that sum of the ages and number of the children. So सबको आप क्या कर दोगे, add कर दोगे, and after adding 46 plus x divided by number of children that is 5. Now just solve that equation and answer is beta yes 14 years. Hope you understood. Now move on example 7 also. The mean of 5 observations is 15. If mean of the first 3 observation is 14 and that of the last 3 is 17, then find the third observations in that way. So the mean of 5 observation कितनी है 15. Sum of the 5 observations कितना हो जाएगा 75. Mean of first 3 observations 14, then sum of first 3 observation कितना हो जाएगा 3 into 14 that is 42. Now mean of the last 3 observation कितने हैं 17 and sum कितना हो जाएगा इनका 3 into 17 that is 51. So third observations is now 42 plus 51 minus 75 is equal to 93 minus 75 is 18. Hope you understood very well. So now beta move on next one, which is arithmetic mean of n ungrouped frequency distributions. So here it is a table, score of x and frequency of f. Okay. So consider the frequency distributions showing score of 35 students in a mathematic test. The mean of these score is total square number of boys. So one way would be to add the score of all the 35 boys as
separated addends and then divide the sum by 35. It will be quite cumbersome. We can make the task easier by multiplying each score by its frequency and then divide by the total number of boys. Then so हम क्या करेंगे, 60 one time है, 65 2 times, then 70 into 6, then 75 into 8. So we are just taking that number and multiplying with frequency and divided by number of frequency, that is 35. And after solving that equations, that number, our answer is 78.71 marks beta, like that. Okay, and after that it is more convenient to find the product of the squares and the frequencies by adding an extra column to the frequency table and arranging the work as shown in the table alongside. So we can do that is like in that way. हमने क्या करा, score these are given, frequency is given. Now you just add one more column. 60 ones are 60 and 65 twos are 130, 76 are 420 and here it is a 2755. So mean is equal to क्या हो गया हमारा, sum of the fx column and sum of the f column. So answer is completely 78.71 marks. Okay, so now the symbol, this symbol is pronounced sigma and is used for the phrases the sum of. Hope you understood well. So now move on, solve example. Example number 1. So here is find the mean of the following distributions. So here it is given x की value and f's की value. So अब हमें क्या करना है, next मीन निकालना है. सो वी नो दैट हमें क्या करेंगे, x और f को हम डिवाइड कर देंगे. सो हमारे fx कितने हैं 1230 एंड हमारे जो क्या है f कितने हैं 50. सो डिवाइड दैट वैल्यू एंड आंसर इज यस 24.6. नाउ एग्जाम्पल 2. So here it is given the height in centimeters of 50 boys are given below. Now calculate the mean height. So height is given, frequencies are also given. So to calculate the mean height we construct the following table like 150 into 3 450, just add 1, 151 into 12 1812 and so on. Okay, so now mean height कितनी हम निकली हमारी 7633, दैट मीन्स 7633 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जस्ट 50, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड आंसर इज 152.7 सेंटीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली. सो नाउ वी जस्ट मूव ऑन एक्सरसाइज 17.1. So here it is given find the mean of the each of the following set of numbers. So हमें क्या करना है, mean निकालना है. So for mean we know the formula very nicely, sum of all numbers divided by sum of total number. Okay, so start with 1, sum, mean निकालने के लिए we are just putting the formula over here, sum of all the, अब हमें ये क्या दे रखे हैं, numbers दे रखे हैं, तो sum of all the number divided by total नंबर. ओके, सो अब हमारे पास क्या है 7, 19, इन सबको हम ऐड कर देंगे. तो 7 प्लस 19 प्लस 31 43 एंड 70 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हमारे, यस हमारे हैं ये 5. सो ऐड ऑल द वैल्यू एंड 170 by 5 and after solving these the mean is 34 beta. So this is our answer. I hope you understood well. So these are the other questions, you have to complete it your own. Okay, so now move on, mode. As said earlier, mean is not the measure of a central tendency. So for different requirements other measures of central tendency are used. Mode is the another measure. Okay, so mode is the value of the variables which occur most frequently in the data. The method involved is to find the distinct value of the observations in the data
and find the frequencies of occurrence of each. The observations with the maximum frequency is called the mode beta. See the example. Example number 1. Find the mode. अब हमें mode निकालना है for that one. So here it is 11, 14, 12. These are numbers. So for that we arrange the given numbers with the same values together. So first we just write it 11, 11, 11. After that 13 and then 14 ascending order. So now mode हमारा क्या होता है? Mode of this data is 17. Why? Because it occurs the more frequently than the other observations. Okay? ये हमारा सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है. 17 occurs the more. I hope you understood the mode. Now example 2. Find the value of x so that the mode of the following data is 13. So the distinct value of observations are 11, then 12, then 13, 18, 19, 20, 25. Okay. x with frequency हमारी है 3, 1, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2. 11 हमारी कितनी टाइम्स है, then 12 कितनी टाइम्स है. Since the mode of data is 13, the number of 13 must have maximum frequency that is more than 3. So therefore x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? Yes, 13. Hope you understood. Now beta, mode of large data. So what's that? Let's see. Putting the same observations together and counting them is not easy. Okay. If the number of observation is large, in such cases we tabulate the data. Tabulations is done by finding the frequency of various observations. Solve examples for more clarity. Just one example first. The height in centimeters of 30 children are given below. 30 children है और उनके heights they are just given here. So after that solution हमने क्या करना है? This is a height centimeters में लिखेंगे. Then it's a tally marks and then a frequency. That means 160 centimeter जो height है वो 4 बच्चों की है, उसकी frequency 4 है और in tally marks we just show that things like that way. Okay, similarly 161, 162, 163 and so on. From the above table we can quickly say that 163 centimeter is the mode since it has occurred the maximum number of times beta. Okay, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है ना ये हमारे कितना है 163 और ये सबसे ज़्यादा टाइम मीन्स सबसे ज़्यादा 9 टाइम्स अकर हो रहा है, बाकी सब तो 9 से छोटे हैं. सो दिस इज कॉल्ड yes mode. I hope you understood. Now example 2. So daily wages of 50 workers of a factory are given below. So daily wages कितनी है 150, 175 and so on in rupees में. और number of workers कितने हैं 12. 8 वर्कर्स को 175 मिलते हैं, 7 जो वर्कर्स है उसको 200 रुपीज़ मिलते हैं, 10 ऐसे वर्कर्स है जिनको 225 रुपीज़ मिलते हैं डेली. नाउ व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा? अब क्या है लेट्स सी. सो मोड इज़ ₹250 as this is the amount of wages of the highest number of workers of the factory. फैक्ट्री में जितने भी वर्कर है सबसे हाईएस्ट कितने हैं इसमें 13 हैं. सो 13 कितने वर्कर्स को मिल रहा है 13 वर्कर्स को मिल रहा है 250. सो 250 इज द मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर वन. आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ जस्ट मूव ऑन एक्सरसाइज 17.2. सो टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. सो दिस इज फॉल्स बेटा, इट्स नॉट ट्रू. नेक्स्ट, the mode is always one of the number in a data. Yes, it's true. Okay beta, so these are the other questions, you have to complete it your own. Okay, so now we are just moving next topic which is median. So now let's see. A group of students took a spelling test. Okay, spelling test हुआ कुछ बच्चों का. After evaluations the teacher announced that on the average each of the 5 students misspelled 18 words. ओके, उसके बाद टीचर ने बोला कि क्या है हर 5 बच्चों ने क्या कर रखा है 18 जो
वर्ड्स है उनको स्पेल गलत कर रखा है. ईच ऑफ 5 स्टूडेंट मिस स्पेल्ड 18 वर्ड्स. Shown at the right is the actual number of words misspelled by each student. Is 18 the mean of these score? Yes. How many misspelled at least 18 words? 1. Does 18 satisfactorily represent the 5 scores? No. The 5 scores are arranged in order. Which score has the same number of scores above it as shown it? See, 10. Is 10 a more satisfactory representative score? Yes. Why or why not? Answer is, it's more representative of all the scores than 18. Okay. If a set of data contains a few very high scores or a very low score, the mean doesn't satisfactorily represent the data. In a situation such as these, it is often more desirable to use a middle score called the median as the representative score beta. The median of a set of number is the middle number when all the numbers are arranged in order of size. Example, in a ascending or in a descending. Okay? To find the median of a set of a number, arrange them in an order of sizes first and select the middle number. If there is a no middle number, that is when the number of numbers in the data is even, then the mean of the two middle score is the median. Okay, I hope you understood well. So now solve example for more clarity. Okay, so now first one is, find the median salary for the following salaries of a workers. So अब हम क्या करेंगे, ये हमारी 3 टर्म्स है 121, 98, 89. ये 2 मिडिल टर्म्स है दैट इज़ 72 एंड 70 और 3 टर्म्स हमारी है 70, 56 एंड 38. सो अरेंज द सैलरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट. तो हमने सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ली सैलरी. आफ्टर दैट काउंट द नंबर ऑफ सैलरीज. कितनी नंबर ऑफ सैलरीज हैं? 8. मीडियन कैसे निकालेंगे? 72 प्लस 70 जो इसकी मिडिल टर्म है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से एंड आंसर इज 71. सो देयरफॉर 71 इज द मीडियन सैलरी. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट, what is the median weekly salary of workers in a firm whose salaries are 84, 60, 50 and so on? Solution. First, arrange the salaries in a descending order. 84, फिर 71, then 65, then 60, 50 and so on. Next, the count the number of salaries. It's 9. तो वो कितनी है? 9. Why? The fifth salary 15 has 4 salaries which are less than 8 and 4 salaries above it. Therefore, 50 is the middle or median salary. I hope you understood well. So now, just see the next one. Example 3. The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. So, ये ना कुछ runs हमारे हैं. Find the mean, mode and median of the data. Are they same? So, sum of the runs कितने हैं? 429. मीन कितना निकलेगा? हम क्या करेंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे. सो ये हमारा हो गया 39. नाउ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा कितना है? 6 and 8 and so on. तो मोड कैसे निकालेंगे? मोड इज़ 15 and 15 इज़ द मीडियन इज़ 15. Thus mean, median and mode are not the same. Okay beta? I hope you clear all what is mean, mode and median. Now example 4. Find the median of the following data. Median निकालना है. So number, these are the number 2, 5, 3, 2 and so on. The ascending order of the data is, सबसे पहले हमने इसको ascending order में कर दिया. After that there are 14 observations. कितने हैं? 14 है ये. There is a no strict middle observations. Here median is the mean or average of the middle observations. That means mean हमारा कितना है? 14/2 7th and 14/2 plus 1 that is 8th observations. So 7th observation 5 और 8th observation में कितना है हमारा? 5.
सो मीडियन कितना निकल गया 5 + 5 10/2 दैट इज हमारा इक्वल हो गया यस 5 के. आई होप यू अंडरस्टूड द मीडियन पार्ट. नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 17.3. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. अब हमें इसका मोड निकालना है. सो मोड क्या होता है हमने अभी सीखा. तो इसका मोड है हमारा बेटा यस हम इधर से और राइट से और लेफ्ट से देखेंगे तो इसका मोड हमारा आएगा 4. सो 4 इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा. I hope you understood well. So these are the other question. You have to complete it your own. Okay. So now next constructing bar graph. So bar graph means column graph gives a pictorial representations of numerical data in form of rectangles of equal width but different heights. These rectangles are drawn either vertically or horizontally keeping equal space between them. The heights of a rectangle depends upon the numerical value of the data it represents. To construct a bar graph, follow these steps. Step number 1. Take a graph paper and draw 2 lines perpendicular to each other on it and call them horizontal and vertical axes. And after that, along horizontal and vertical axes, mark the corresponding informations according to the questions. After that, choose a suitable scale to determine the height of the bars. Okay. Step number 4. Calculate the height of a various bars according to the scales chosen. Hope you understood constructing bar graph. Now solve example. Example number 1. 100 students of class 6 in a school appeared in annual examinations. The number of students passing it in a different subjects is tabulated below. So subjects are English, Hindi, Mathematics, General Science, Social Science. And number of students passed, English में 80 and Hindi में 60 passed हुए and so on. Represent the data by a bar graph. So solutions. हमने क्या करना है? The bar graph is shown below. Bar graph showing the number of students passing in a different subjects. स्केल कितना है ये हमारा 1 यूनिट का और 1 यूनिट हमारी कितनी है 10 स्टूडेंट्स की. सो इंग्लिश में कितने हैं हमारे यस ये उसके अकॉर्डिंगली हमारे मार्क्स दे रखे 80 और हिंदी में कितने 60 के पास एंड मैथमेटिक्स में 70 जनरल साइंस में 90 एंड सोशल साइंस के कितने हमारे 50. सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट मेक बार ग्राफ बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. The following tabulated data represent the productions of cars in a car factory during 4 consecutive years. So, 2019 में 6 number of cars कितना in 10,000. 2020 में 11 10,000 में 2021 में 17 and so on. Now इसका बार ग्राफ हम देखेंगे. सबसे पहले हम स्केल लेंगे 1 यूनिट हमारी कितनी हो गई 10,000 के बराबर. So 2019 में कितने हैं वी आर जस्ट शोइंग लाइक दैट वे एंड 2020 लाइक दिस वन एंड सो ऑन बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड द बार ग्राफ. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन विच इज एग्जाम्पल 3. रीड द बार ग्राफ गिवन इन एग्जाम्पल 2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब सेकंड के बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. सो this bar graph in a general gives informations about the number of a car produced in a car factory for the 4 consecutive years from 2019 to 2020. 2019 से 22 के बीच में जितनी भी कार्स हमारी प्रोड्यूस्ड हुई है ये इंफॉर्मेशन हम बार ग्राफ्स में दे रहे हैं. ओके. सेकंड क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्रोडक्शंस ऑफ कार वाज द मैक्सिमम. सी पार्ट में है मिनिमम वैल्यू पूछी है. डी में क्या पूछा है इनका डिफरेंसेस पूछा है और ई में क्या पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द प्रोडक्शंस ऑफ कार्स ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 21 एंड एफ पार्ट्स दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शंस ऑफ द कार्स ड्यूरिंग द ईयर्स 2019 टू दैट इन द ईयर 2020. सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट आंसर. सो बी पार्ट का आंसर है बेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार वर प्रोड्यूस्ड. यस ये प्रोड्यूस्ड हुई हमारी 2020 में. ओके. एंड सी पार्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड 2019 में. ओके 60,000
एंड डी पार्ट का आंसर है डिफरेंस कितना हो गया इनका, डिफरेंस हो गया इनका 50,000. एंड ई पार्ट द डिफरेंस इन द प्रोडक्शंस ऑफ कार्स ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 21 का डिफरेंस कितना हो गया, इट्स 40,000. एंड एफ पार्ट the ratio of cars produced in the year 2015 to the number of cars produced in the year 2022. हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 2:3 रेशियो. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन डबल बार ग्राफ्स. अब ये डबल बार ग्राफ्स क्या होता है, लेट्स सी. प्रीति मेड अ सर्वे टू फाइंड आउट हाउ हर क्लासमेट्स यूज देयर होम कंप्यूटर्स. She recorded the girls and boys' responses separately. So, she later made a double bar graphs to compare the two sets of data using the following steps. Step number 1, draw two axes. Step 2, label the vertical axes as a number of students. Choose an appropriate scale and equals intervals. Step number 3, label the horizontal axes as computer use and list the uses. And fourth one में for each use draw one bar for boys and one for girls. Use different colors for boys and girls. आप different colors use कर सकते हो. Then how computers are used. Computer use word processing, boys ने 4 and girls 3. Games 8 boys 6 girls. emails का क्या है, 5 boys हैं and 8 girls है. internet 6 boys and 4 girls. okay, now step 5, make a key to show what each color represents, then give the graph a little. so like that one बेटा. word processing का ये जो pink में हमारे boys हैं and other color is for girls, like this is for games and other things. hope you understood. After that, from this double bar graph, one can easily answer the following types of questions. कौन कौन से questions दे सकता है? Which computer used in most popular among boys? How many more girls use a computer for sending emails than boys? For which computer use is there the least difference between the boys and girls? And which computer use a least popular among girls? I hope you understood. Now note a double bar graph compares two sets of data. Yes, it's true. Okay. So now solve example. Example, the performance of a student in first term. First term की performance and second term is given below in the tabular form. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the questions like that. So ये हमारे subjects हैं, ये फर्स्ट टर्म में और ये हमारे सेकंड टर्म्स के कितने हैं, इसके स्कोर्स गिवन है. सो इन विच सब्जेक्ट्स हैज़ द स्टूडेंट्स इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. तो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट मेक डबल बार ग्राफ लाइक दैट. ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है और हमने स्केल क्या चूज़ करा है, 1 सेंटीमीटर हमारे 5 मार्क्स है ऑन अ वर्टिकल एक्सिस में. सो अब ये आप इसका आंसर दोगे. द डबल बार ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ डाटा इज एज अंडर. सो क्या है हमारे मैथ्स, दिस इज मैथ्स, ये केमिस्ट्री और ये हमारा हो गया हिंदी. ओके. सो आफ्टर दैट एक्सरसाइज 17.4. फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 obtained by 6 students of a particular class. Represent the data on a bar graph by choosing an appropriate scale of 1 unit is equal to 100 marks. So beta, students, these are the name of students and these are the marks obtained. अमित ने कितने मार्क्स लिए, 450. चंद्रा ने कितने लिए, 500. डॉली ने 300 एंड सो ऑन. सो अब हमें क्या करना है, इसका एक बार ग्राफ बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट. हम कैसे बनाएंगे. सो फॉर दैट थिंग्स फर्स्ट draw one line this and this is. अब हमारा क्या है, हम इसका स्केल लेंगे. सो 1 यूनिट हमारे कितने हैं, 100 मार्क्स के हैं. तो वी आर जस्ट राइटिंग स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स. सो 0, 100, 200, just write it 100,
200, 300, 400, 500, ओके एंड 600. तो ये हमारे हो गए 300, 4, 5 एंड 6. अब ये हमारे हो गए नेम ऑफ स्टूडेंट. यहाँ लिखेंगे हम नेम ऑफ स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले हमारा क्या है, अमित. अमित के कितने हैं बेटा, 450. सो ये हमारे 4 है और ये 50 है, तो इन दोनों के जस्ट बीच में लाइक दिस वे. ओके, अगर हम इस तरीके से शो करेंगे तो ये हमारा किसका हो जाएगा, अमित के स्कोर हो जाएंगे. तो ये नाम लिख दो आप, अमित. ओके एंड चंद्रा. चंद्रा के कितने, 500. सो जस्ट मेक इट लाइक दैट. ये हमारे चंद्रा के हो गए परफॉर्मेंस. तो राइट इट चंद्रा. एंड देन डॉली. डॉली के कितने, 300. सो राइट इट डॉली. सो दिस इज हाउ यू जस्ट मेक इट. आफ्टर डॉली, हर्ष के आपने 360 बनाने हैं, देन गरिमा के 400 एंड कमल के 540. आई होप you understood well. So these are the other questions beta, you have to complete it your own. Okay, so with this we ended the chapter. I hope you understood well. So you do practice and do rest of these exercises by your own.